हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवर शाइन एंड एवर स्मार्ट। आज हम ले रहे हैं मेंटल हेल्थ पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक इज अबाउट सोशल मीडिया। सबके पास सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम बोलो, स्नैपचैट बोलो, एक्स बोलो, पिन इंटरेस्ट, फेसबुक, यूट्यूब। इवन राइट नाउ द वीडियो यू आर वाचिंग विथ मी इज ऑन यूट्यूब। व्हाट्सएप इज ऑल्सो देयर, लिंक्डइन प्रोफाइल भी है सबका आजकल। यू हैव गूगल, यू हैव इंस्टाग्राम। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है विच अराउंड विच आर लाइफ रिवॉल्व्स। नाउ येस, यू विल से वी आर टीनेजर्स, सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनका नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होता है लाइफ पे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से आपके स्टडी स्कोर्स भी लो होते जाते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ एंड योर लाइफ एज अ स्टूडेंट। नाउ यू हैव टू लर्न टू बैलेंस द प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्रोज भी है, ऐसा नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ कॉन्स है। नहीं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, वी आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर। वी ऑल्सो नो कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमने भी यूज़ किया है इंस्टाग्राम वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यू वोंट बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम एंड अंडरस्टैंड। पहले हम प्रोज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज सोशल मीडिया ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, enhanced connectivity, opportunities for networking, community building, access to information, news, avenues for self expression and entertainment। ये सब तो सबको ही पता होता है कि सोशल मीडिया पे होता क्या है। नेक्स्ट इज कॉन्स। कॉन्स होता है जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो रियल लाइफ में आता है। प्रोज होता है आप लोग का जो ऑनलाइन प्रोज होता है। यूजली दीज डू नॉट हेल्प यू इन ऑफलाइन थिंग्स। कॉन्स होता है जो रियली इफेक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ पे। Social media has several drawbacks. Drawbacks are the cons and disadvantages. Privacy concerns, spread of misinformation, negative impact on mental health, addiction, cyberbullying, reduced face-to-face communication. अब cons में इतने सारे बात होते हैं, ये drawbacks जो है ये बहुत खराब disadvantages है। Privacy concerns, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे Instagram पे हर हर मिनट हर घंटे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। सो इट इज़ अ प्राइवेसी कंसर्न कि नहीं डालोगे तो पीपल स्टार्ट मॉकिंग यू, बुलिंग यू। नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। आपको पता है, दोज हु आर इन 12th नो कि 10th स्टैंडर्ड में कितना फेक न्यूज़ आता है। और जो 10th में है उनको पता है कि कितना फेक न्यूज़ स्प्रेड होता रहता है, किसी बच्चे ने कुछ भी डाल दिया तो। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। सबको पता है मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इट इज नेगेटिव, इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। It leads to addiction. I have seen people having very bad mobile addiction. I might not be talking about you. Rage, gamers rage एक होता है, that is mainly for gamers. लेकिन बात जो है ना, स्टूडेंट्स पे भी आता है कि अगर थोड़ा शांति मिल रहा है मूवी देखते देखते मोबाइल पे, पेरेंट्स अगर फोन ले लेते हैं, चिल्ड्रन गो वेरी, their behavior becomes pathetic. आई विल नॉट टेक नेम्स और एग्जाम्पल्स, लेकिन आप न्यूज़ पे सर्च करो, एडिक्शन की वजह से बहुत ख़राब चीज़ें हो जाते हैं। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। अब कुछ बच्चे होते हैं कि दे हैव नेवर बीन ऑन इंस्टाग्राम, दे डोंट नो हाउ टू एडिट द फोटोज और द वीडियोज, एंड दे जस्ट पुट इट अप अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। और स्कूल में पहले से बुलिंग हो रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और समथिंग। साइबर बुलिंग इज ऑल्सो एन इशू, एंड कुछ बच्चे टेक वेरी ड्रास्टिक स्टेप्स जब साइबर बुलिंग थोड़ा ख़राब हो जाता है। रिड्यूस्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आप लोग को सबको पता है कि वीडियो कॉल आई डोंट थिंक कोई करता होगा आजकल, अनलेस इट्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स और समथिंग, बट आई थिंक फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो देख के होता है रियल लाइफ में, दैट इज मच रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इज वी कम टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब आप देख सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग अपना पूरा लाइफ का सब कुछ बताते रहते हैं। सो दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सोशल कंपैरिजन, साइबर बुलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो इज अ वेरी बिग थिंग। आजकल क्या होता है, एंग्जाइटी इज द मेन थिंग कि पीपल आर लाइक अरे मैं क्या करूँ, इसने ऐसा डाला, मैंने वैसा डाला। वो फॉलोअर्स का एक पागलपन होता है। राइट नाउ यू कैन सी आई एम ऑल्सो जस्ट बिगनिंग। I am very thankful for few of you who are viewing. In my previous video I had gotten 26 views. Thank you so much guys. I would really appreciate your support if you really subscribe to our channel, because we are trying to help students here. आपको पता है that we know that students के ऐसे problems होते हैं. You can go to my first video and you can see what we tried to say in our channel's description. You can see what we are trying to attack over here that the students are facing an issue in. सो बैक टू द वीडियो। आई एम टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी। हम लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब। लेकिन कुछ होता है कि 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए बाई डूइंग ऑल दोज वियर्ड ट्रेंड्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। कभी कभी हो जाता है कि मैंने कुछ डाला, किसी ने नेगेटिव कमेंट डाल दिया, यू गो इन टू डिप्रेशन। लोनलीनेस। ऑनलाइन क्या होता है कि लगता है कि अरे मेरे पास 10K फॉलोअर्स है तो मेरे पास 10K दोस्त है। नहीं होता है यार, यू कम टू द रियल लाइफ, नो बडी केयर्स। नेक्स्ट इज सोशल कंपैरिजन। ऐसे ही होता है, देयर वाज अ फेज व्हेन somebody in our group, I'm not taking names again,
somebody in our group, she had social comparison. उसके बस 9 million followers थे, and 9.8 in fact, and she was just 0.2 million away from 10 million. But another fellow, he was doing better off, he had already crossed 10 million mark. She was having social comparison. स्कूल में लोग used to bully her. साइबर बुलिंग का जो होता है, as it is, that is a big problem. साइबर बुलिंग is not always कि स्कूल में होता है, दोस्तों के साथ होता है. It is sometimes online unknown people करते हैं. It is sometimes people with the same name but different account. Next is fear of missing out. Yes, I have seen students facing this issue कि अगर मैं कुछ मिस आउट कर दूँ, कभी पढ़ाई का तो नहीं होता है यूजुअली, आई डोंट थिंक कोई इंस्टाग्राम पे पढ़ाई का बात करता है, बट वो नया मीम आया है, समथिंग न्यू अबाउट द इंस्टाग्राम मीम्स एंड चैट्स एंड वगैरह वगैरह, किसी का स्टोरी मिस कर दिया, देन स्नैपचैट पे किसी का फोटो नहीं देखा, द फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ बिग कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर. इसके बारे में वी विल टेक इट अप इन अनदर टॉपिक और समवेयर एल्स, बट दिस इज समथिंग एवरीवन फेसेस. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज. अगर ज्यादा यूज करोगे, these are the problems which you will face in your life. Next we come to strict timing and understanding. अब क्या होता है, माँ बाप कभी they are like, ठीक है कर लेगा बच्चा, अपने आप कर लेगा, तो you have to be strict, you have to understand. Now you guys are grown up. I think everyone watching my video is above 10. Comment below how old you are, or if which grade you are in and you're watching my videos. This is your age to study. Abhi social media is not for you. Stay connected, be social, don't exclude yourself, don't keep updating everyone about your life, don't fear what others say, care about yourself. Don't think कि मैं student हूँ and I will have to only be on social media. No, you have to study mainly. I'm not saying social media से पूरा exclude हो जाओ. Be social and don't exclude yourself. सबको बताना नहीं है कि आपके दुनिया में चल क्या रहा है, और डरो मत क्या कौन क्या बोलेगा कैसे होगा. अपने बारे में सोचो कभी, बिकॉज सोशल मीडिया समथिंग यू आर जस्ट यूजिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर वो तुम्हारा दिमाग खाने लग जाए और यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, देन देयर इज नो यूज ऑफ योर सोशल मीडिया. नेक्स्ट वी कम टू डोंट लीव द ऑनलाइन वर्ल्ड फुल्ली. आई एम नॉट सेइंग कि ऑनलाइन वर्ल्ड फुल्ली स्टॉप कर दो, बंद कर दो. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिट, यू हैव टू लर्न टू सीक हेल्प, यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेटजीज, you have to keep distance from negativity, you have to understand the psychology, and you have to care about your mental health. अब what do I mean by each of these points? Understand the limit. क्या होता है कुछ बच्चों का, I have seen, हम we are students who are, we are school pass outs, most of us are school pass outs, we have finished our 12th standard and we are sitting here and working towards helping the students जो problem हमने face किए थे. So हमारा screen time भी we try not to get it more than 12 hours, but हमारा काम रहता है like somebody working on this PPT, उसका लैपटॉप पे काम थोड़ा ज़्यादा रहता है. आई एम वर्किंग ऑन oratorical skills right now, so मेरा थोड़ा प्रैक्टिस रहता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिट. नेक्स्ट इज सीकिंग हेल्प. क्या होता है बच्चे ना यूट्यूब वगैरह टिकटॉक वगैरह देख के फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं. दे आर लाइक अरे मैंने क्या कर दिया. यू कांट डू दैट. यू हैव टू लर्न टू सीक हेल्प. अपने दोस्तों से पूछो, फैमिली फ्रेंड्स जो भी है, कोई बड़ा होगा, भाई होगा, बहन होगी, यू कैन आस्क देम फॉर देयर हेल्प. नेक्स्ट इज यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेटजीज. यू हैव टू नो व्हाट इज गुड, कितना डालना है कितना नहीं डालना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी. नेगेटिविटी मतलब साइबर बुलिंग नहीं होता है. नेगेटिविटी इज सीइंग द रॉन्ग कंटेंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे. अगर आप मेरा वीडियो आधा देख के छोड़ दोगे तो यू विल थिंक कि हाँ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग सेंसिबल. यू हैव टू लर्न टू कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, डोंट फॉलो दैट वीडियो. You have to understand क्या बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है. Like if on Instagram there's something called trending right now. Trends you do not follow unless you are sure of those trends. क्या होता है ना, बच्चे ड्रेस वगैरह खरीद लेते हैं ट्रेंड्स के बेसिस पे. You cannot work like that. You have to understand that trends are something that are just placed by people who are very famous. You have to understand कि वो कैसे चलता है. Not everything suits everyone. Next is understanding psychology. हमारा क्या होता है, people do not understand कि उनका psychology क्या है. What happens is students do not want to understand कि social media का negative impact थोड़ा खराब हो जाता है. तो the psychology of social media is to grab on to its followers. You have to understand how to cut yourself from that. अगर आपका screen time limit नहीं हो रहा है, put a timer. I'll share the video also कि कैसे वो timer आप लोग को पता है. I think you all are very aware of how to put that timer on the app कि जैसे I cross 1 hour on this app, it will not open till the next day. So you have to be a little strong on yourself. You have to care about your mental health. मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, हमारा टीम यहाँ पे पीपीटी बना सकता है, वीडियो बना सकता है, but we cannot really care about it unless you care about your own mental health.
Okay, so now we are coming to understanding the need. What is understanding the need of social media? You have to understand the need of social media. Social media stands only for being social. If you are social doesn't mean कि आपके दोस्त होंगे. Social media पे अलग रहता है सबका. Social media is a way of expressing yourself, but you cannot say कि social media is my life. Okay, you're a student, you have to focus on your studies mainly. फर्स्ट इज यूसेज फॉर नॉलेज. क्या राइट नाउ यू आर यूजिंग इट फॉर नॉलेज कि अरे ये लोग बोल क्या रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू ब्रिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया. नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न टू कीप इन टच. नाउ कीप इन टच डजंट मीन कि इंस्टाग्राम पे मैंने कॉफी पिया है डाल दिया, मैंने स्पा पे गए थे डाल दिया, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू लर्न टू कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बट नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग थिंग. नेक्स्ट इज लर्निंग द टेक्नोलॉजी. अब आई थिंक एवरी वन इज अवेयर व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, कैसे यूज करना होता है. यू हैव टू लर्न न्यू मटेरियल. अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि बुक्स एंड मटेरियल ऑनलाइन रहता है. यू हैव टू नो हाउ टू यूज योर मटेरियल. मटेरियल में कुछ ऐप्स भी आते हैं, कुछ लर्निंग ऐप्स आते हैं. लाइक सम ऑफ देयर पर्सनल कोचिंग सेंटर्स हैव देयर ऐप्स, कुछ ट्यूटर्स का अपना ऐप होता है. तो मटेरियल डज नॉट ऑलवेज मीन बुक्स. नेक्स्ट इज गेटिंग हेल्प. यू हैव टू लर्न टू गेट हेल्प. कुछ फोरम्स होते हैं, सोशल मीडिया फोरम्स. I think everyone is aware of it. Twitter, Telegram, I think everyone has joined and everyone has an account. So you can join forums and get help. Next is correct online usage. You cannot use social media for updating people about your life. You don't update people about your life. It's your life. Live it large, enjoy it. You can't do like this. Next, we are coming to strict limitations. You have to limit your daily screen time. As a student, we used to have very strict limitations. Like हमारे ग्रुप में वी हैव गॉट समबडी, कोई है, ही हैज गॉटन 97% इन द बोर्ड एग्जाम्स, 12th बोर्ड्स में 97%. सो फॉर दैट यू हैव टू लिमिट योर डेली स्क्रीन टाइम. इट स्लोली बिगिंस. अचानक से यू कैन ड्रॉप फ्रॉम 20 आवर्स टू 2 आवर्स, but you can't keep 20 hours a day, you can't keep 12 hours a day. These are not allowed. You have to limit yourself. Right now I cannot show you, but my screen time from yesterday is only 3 hours. Okay, we are school pass out, so you can understand how it is, but 3 hours चाहिए होता है. And board exams are closing in after May, June, July, August onwards. 3 hours से भी कम हो जाता है. It should only be 30 minutes. 30 minutes भी कम करना चाहिए. You should only see it for 5 minutes at night, sleep off and get up in the next morning and start studying. So as a student, you cannot have such big screen time. No. Next is social media apps. You have to limit yourself. Social media accounts delete mat karo, but don't be very active on them. You have to understand how to use your social media accounts. You cannot get stressed and tense because of those. Next is limiting usage. As I had said, limit them. Timer लगाओ कि 2 घंटे हो गए, अब बंद करो. फ़ोन तो बंद नहीं हो सकता है. अगर चाहिए मम्मी पापा को पकड़ा दो फ़ोन की, मुझे मत देना जब तक मेरा पढ़ाई हो जाए. यू कैन अंडरस्टैंड योर पियर्स. यू कैन आस्क देम कि तुम कैसे लिमिट करते हो. इफ एवरीवन इज वर्किंग ऑन द फोन, देन talk to people who limit themselves. You cannot have stress anxiety because of that. Learn to cope up. फोन के अलावा बहुत अच्छी चीज़ें हैं. Go for a walk, do some physical activity. Don't waste your time like this. And you can always be on social media, but अगर आप cope up नहीं करोगे, if you get worried about how people will think of it, you can never cope up. You can never do this 97% in your board exams. I'm talking for both 10th and 12th standard. I'm also talking for if any younger students are watching 9th standard also, 8th standard, 11th standard. बहुत बच्चे होते हैं who are just watching this video. You should understand this. So it's your call. You have to understand how to limit your usage. You have to keep your mental health in good condition. You have to limit yourself. You can't be with everyone on social media all the time. So that's it for this video. Don't forget to like this video, share it with your friends and everyone who requires it. Subscribe to our channel. Don't forget to click that bell icon, and we'll be back with another interesting video on our life, student life. So that's it. Thank you and bye guys.